Hey everyone, how are you? And once again, welcome back here in the live broadcast. Okay, so who is joining the first? Okay, let me also share the link in the group to join the users as much as possible. Okay, copy this link and let's go here. Okay. Let me copy the link and can you please tell me that my voice is clear? Okay, I shared this link here. So, okay, so Bilal Jan, hello there. Yes, Bilal, how are you? Okay, thank you. Okay, Bilal, if you have any query or you want to discuss some scenario, so please go ahead. Yes, Bilal, please go ahead on relationship. Okay, so do you understand the Urdu or Hindi? Playlist and so on. Yes, Bilal, it's very important. Can you please tell me, do you speak in Urdu or Hindi? Do you understand Urdu or Hindi? Then I'll suggest you my series. I already shooted full course on it. Okay, so ओके सो बिलाल आप ओके उर्दू के अंदर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको उर्दू के अंदर रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे तो बेसिकली रिलेशनशिप पे जो ओवरऑल लारावेल का कोर्स है वो मैंने उर्दू और हिंदी के अंदर बनाया हुआ है, राइट? उर्दू एंड हिंदी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। तो आप मेरा वो वाला कोर्स दे सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारे रिलेशनशिप कराए हैं, जितने भी लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है
वो सारे मैंने रिलेशनशिप कराए हैं, राइट। और देन उसके बाद रिलेशनशिप के बाद मैंने उनको फैक्ट्रीज़ और सीडर्स के ज़रिए डेटा को सीड पे कराया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास रिलेशनशिप है, राइट, वन टू वन है, वन टू मैनी टू मैनी है, और उनके ज़रिए आपने फैक्ट्रीज़ के ज़रिए डेटा को सीड कैसे करना है, राइट। तो ये भी मैंने सीरीज़ के अंदर कराया है, और सीरीज़ का लिंक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरी सीरीज़ है लारावेल 9 कोर्स इन हिंदी और उर्दू, राइट। ये सीरीज़ का नेम है, ये लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है। इसकी अराउंड 70 और 75 समथिंग इस तरह की वीडियो यहाँ पे सीरीज़ की जाएँगे, तो वहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीटली लर्न कर सकते हैं। और अगर आप ये रिलेशनशिप अगर आपको लारवल का बेसिक आइडिया है, तो आप मेरे इस लारवल कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, तो आप एक प्रोफेशनल डेवलपर बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कई चीज़ें आती हैं और आप ऐसे करें, इस सीरीज़ को स्टार्ट करें, ठीक है? उसमें से देखें जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप स्किप कर दें, जो चीज़ें नहीं आती वो कवर करते जाएँ। और इस सीरीज़ के एंड पे मैं एक प्रोजेक्ट बनवाता हूँ जिसके अंदर फुल एक ब्लॉग सिस्टम है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटर हैंडल कर सकता है, तो आप वहाँ से ये चीज़ें भी लर्न कर सकते हैं। ओके, भोला कुमार, यस, गुड आफ्टरनून। ओके आदित्य, Cynthia Kumar sending mail through Laravel API. Mhm. So do you want to you are suggesting me to shoot this topic on this sending email through Laravel API? Okay, Tanzim Iktisam, do you need to use services container in project? Service container. Okay, actually, I'm what's Tanzim Tisam. I'm not getting you that you are talking about which service container. Are you talking about any of services pattern or repository pattern? Please clarify it, then I'll answer you. How to send custom image with the SMT email. Yes, you can pass the files using attach helper in the mail facade, or you can also use closure to attach your files using attach helper. So you can give it a read from the documentation. फिर जब वैलिडेशन अप्लाई करते हैं अगेन रिडायरेक्ट सेम नो शो एंड और एक्सेस मैसेज। एक मिनट सर, मैं जब वैलिडेशन अप्लाई करता हूँ अगेन रिडायरेक्ट टू सेम पेज, नो शो एनी एरर मैसेज नॉट डेटा एंटर्ड। जी नदीम, आपका क्वेश्चन है कि मैं किसी भी पेज पर फॉर एग्जांपल वैलिडेशन लगी हुई है, वहाँ से आप जाते हैं, लाइक आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं और सेम उस पे आप वापस आ रहे हैं, तो आपको एरर मैसेजेस डिस्प्ले नहीं हो रहे, राइट? आपकी क्वेरी ये है। तो बेसिकली आप उसी पेज पर रीडायरेक्ट करें या किसी और पेज पर रीडायरेक्ट करें, वहाँ पे आपका जो एरर को कैच करने का वहाँ पे आपका मैकेनिज़्म है, उसको देखें, उसके अंदर कोई इश्यू होगा, राइट? अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसी सेम पेज पर कर रहे हैं, तो आपका जो वैलिडेशन का कैचिंग का जो एल्गोरिदम है, वो भी उधर ही होना चाहिए, और वहाँ पे जो भी आप अलर्ट्स की शेप में शो करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको कैच करके उसकी अलर्ट के अंदर शो करा सकते हैं। तो बेसिकली एरर्स आपके पास एरे होती है जिसके अंदर आपके जितने भी एरर्स होते हैं वो कैटर होते हैं। Okay, actually, I'm talking about dependency injection. Hmm. Um, Mostly, I'm using the dependency injection. Like in this case, I used recently for the repository pattern, where I connected the interface and my repository with each other. So I created the you can say that custom link with those one.
So I mostly I'm not using these things, but you can watch my repository pattern series where you will learn that how you can basically automate this dependency injection. So Laravel is doing this using service container, injecting third-party classes. Mm, yeah, Tanzim, but I didn't do this before. I don't have too much experience with this thing. So sorry to say that. Okay, Bilal, you are welcome. एक हमारा सोशल मीडिया लॉगिन पे वीडियो बनाएं। जी, आदित्य कुमार, अ, मैं इस पे शूट करूँगा, बट उसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है आपका solutions.cdlcell.com। वहाँ पे जाके आपने साइन अप करना है और उसके अंदर एक पोर्शन है लेसन्स का। यहाँ से आप हमें लेसन सजेस्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे लेसन सजेस्ट करें। मैं ट्राई करूँगा वहाँ से जितने भी लेसन्स विज़िबल होते हैं मैं उनको पहले शूट करता हूँ। तो आप वहाँ पे लेसन सजेस्ट करें। और सोशल मीडिया के लिए आप यूज़ कर सकते हैं लारावेल के अंदर आपके पास है सोशलाइट। सोशलाइट पैकेज का आप यूज़ करके वहाँ पे सिंपली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो बहुत प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अलावा गाइस जो भी यहाँ पे डेवलपर्स मौजूद हैं, आपकी जो भी क्यूरीज़ आपको आ रही होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, राइट? तो आपने अगर उस चीज़ का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विदिन सर्टेन टाइम, राइट? तो आप हमारी इस वेबसाइट पे पोस्ट कर सकते हैं अपना प्रॉब्लम विद डिटेल्स विद द कोड, राइट? सो हमारी टीम आपको विदिन 24 आवर रिस्पॉन्ड करेगी। बट मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन टेक्निकल होना चाहिए, सिनेरियो बेस्ड ना हो। लाइक कोई आपको एरर आ रहा है, आप वहाँ पे अपना इमेज भी अटैच कर सकते हैं और वहाँ पे अपना कोड भी शेयर कर सकते हैं कि हमारा ये कोड है और इस पे हमें ये वाला एरर आ रहा है, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, एनी प्लान्स ऑन टेस्टिंग ट्यूटोरियल्स इन Laravel? Um, for now, I don't, but maybe in the future. So in next few months, I'm not planning this on the testing stuff. I'm thinking about to shoot the series on e-commerce platform where I will start it from the scratch to how you can integrate the theme into the Laravel, and then I'll implement the user stuff, admin stuff, and then e-commerce stuff. Uh, Also, I'm planning to shoot the separated videos. Like, for example, in the previous week, I shooted videos on how you can add multiple data table into the single page, right? So I think it's a good way to shoot separated videos, not the full series, because if you are intermediate or you are intermediate or professional developer, you don't need the full course, right? So you need just a hint, and then you will do this in your own way. So that's why I'm trying to shoot the videos which are more useful. Like I did this for the data table, then I will use this how to you can multi-select values in the edit, how to refresh the DOM in the multi-select, and so on. You can also suggest these topics which are unclear for you, so you can comment on, not comment on, you can post it on our website solutions.cdlcell.com. So let me pin this message. Okay, I pinned this message, so you can go to our this website and you can suggest the lesson to us. So I will shoot the lesson on it. I will shoot the video on it, not the lesson. Okay.
skill. And today I launched another series which is about hosting, right? How you can host your website on the server. So I'm shooting this full series on Hostinger, that how you can log in into your account, to how to create the domain, how to create the subdomain, how to create the email accounts, how to create the specific directory and post and upload your project on it. Then how you can enable the SSL and so on. There are a lot of things which will teach you that how you can deploy your application, and I will also try to shoot more things like for example you deployed the Laravel application on the hosting, right? So how to optimize this on the server. So if you will visit the documentation of Laravel, it's clearly mentioned that how to cache the route, how to clear the cache when it's needed, and so on things. So I will try to shoot those things also. Okay, Nalan. So may I ask what kind of email services you like most of your Laravel kind of email services? Okay, so are you talking about the email services like you are sending email through the contact us form like this? You are talking about these things? If yes, I'm using the most of the time I'm using the hosting services where you can create your mail accounts and then you can configure this into your server. So I will also try to shoot this video on it, that how to create the email account in the hosting and then copy the credentials and add them into the env. So then this will send you an email. And by the way, I have a full course on email, that how you can send the simple email, how you can send the advanced level email, where you can differentiate the emails of user, that if the user is sending email, so the color and theme should be different. If the administrator is sending, it should be different, right? So how you can activate the multiple themes in your application. For example, you have three themes, right? And you activated the first one, so it will send the email to the first one, right? But if you activated the third one, so it will send the email using the third design, right? This awesome stuff. So you can check out this whole course on it too. It's totally free, right? So let me share the link here so you can get the benefit from it. Laravel email series. Okay, this one. This is the series I'm talking about. Yes, Nalan, you are most welcome. Uh, okay, so you're from Bangladesh and you are talking about salaries. Hmm. Actually, we cannot define this into single quote, because every company have different requirements and every developer have different skills. Based on their skills, you can get the salary. But I will give you a general opinion. So, for example, you are a beginner, so the beginner and you have some basic knowledge, like you created some few projects, so the salaries would be around 15,000, right? 1 to 15,000. And then if you are having 1 or 2 year experience, mostly 2 year experience, then its range is 50 to 1 lakh.
right? And then if you are more senior developer, then the salaries would be around 1 to 150. If you have multiple year of experience, so maybe it's 2 lakh or something above. But it's totally depend upon your expertise. It's doesn't matter if you have 2 year or 3 year experience. Maybe the 1 year guy will do the same job as 3 year experience person is doing. So that's why it's totally depend upon your skills, and then you will be offered with the good salary. And uh, and can I ask the same question from you, that if you define the salaries in the Pakistani rupees like RS, so in the Bangladesh, so if you are a junior developer, then how much your salary is, intermediate and professional, right? What's the range of the salaries? Just define the particular lines. Okay, anyone else have any queries? So please don't hesitate to share your queries. और गाइस ये चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप है, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे डेवलपर्स कनेक्टेड हैं, राइट? वहाँ पे अराउंड 300 डेवलपर्स मौजूद हैं, राइट? सो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, जितनी भी क्यूरीज हैं, फॉर एग्जांपल किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, राइट? सो इस चीज़ के लिए मैंने वहाँ पे एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है, इसकी डोमेन है solutions.cdlcell.com। तो आप अपनी क्यूरीज वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे अब पोस्ट करने में डिफरेंस क्या है व्हाट्सअप से? व्हाट्सअप से क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल एक पर्सन मैसेज करता है, उसको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, वो कंट्रोलर कोड शेयर करता है, राउट कोड शेयर करता है, इसके अलावा जो एरर का पेज है वो शेयर करता है, तो उसकी जो मैसेज हो जाते हैं 5-6 हो जाते हैं, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करता है। तो अब जो बाकी ऑडियंस होती है वो इस चीज़ से बोर हो रही होती है, राइट? अगर कोई एक टॉपिक डिस्कस करता है तो वो इट्स फाइन, राइट? बट अगर आप कोई भी सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पे वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, तो आपको आंसर विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। और मोस्टली मैं व्हाट्सएप पे जितनी भी क्यूरीज आती हैं, जब से ये वेबसाइट डेवलप किया है उसके बाद मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं फोकस करता हूँ वहाँ पे अपनी वेबसाइट पे। वहाँ पे हम लार्ज ऑडियंस को विद इन डिस्क्रिप्टिव उसके अंदर हम आंसर दे सकें, और हमारी टीम विद इन 24 आवर्स अलहमदिल्ला अभी तक सभी को सर्व कर रही है। जिसकी भी क्यूरी होती है वहाँ पे उनको रिस्पॉन्ड किया जाता है। तो अगर आपकी भी क्यूरी है तो विदाउट एनी हेजिटेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपनी क्यूरीज। Okay, guys, if you have any question, please post your queries. So I'm planning to end this broadcast after 5 minutes. Right, before this we are doing the 1 hour broadcast, but now I'm planning to shoot only 30 minutes broadcast. Right, so it will enough
to all of respond to all of your queries. Okay, still there are 4 minutes are remaining. If you have any query, post your queries here. So I'll try to answer you uh, using P4. First in, first out. Okay, okay, okay. Tanzim Ibtisam, why you are you writing something? I asked. Hmm, I asked you about the salaries of Bangladesh developers, the guys who joined us, so they also want to know this thing: how to generate slug with the helper function. Yes, Bola Kumar, in the new Laravel version, you cannot use the slug helper because it's removed from the facade, removed from this class, right? So you can, before this, you are using the str slug something like this, but you now this method is removed, so you can use facade to generate the slug. Like the facade is what's the facade? You can take it from the documentation. So you need to use this facade to generate the slug. Suleiman Var, is Laravel 8 is stable nowadays? Yes, Suleiman. Yes, Laravel 8 is also stable, right? The thing is, for example, you have an application, right, and you want to upgrade to the new one, right? To for the sake of the to Laravel 10 is game, right? So you don't need to jump into the new one. Laravel 10 is also stable. If you are building a new application, right? So then you don't need to create the Laravel 8 application. Then you need to move with the Laravel 10 application. Then it's makes sense to start with the Laravel 10. Otherwise, Laravel 8 is also awesome. The few things are changed in the Laravel 9 and 10. Okay, Suleiman. So, if you have any question or confusion, so you can ask it again here. Bhola Kumar sir, please make a video for deploy Laravel project on server. Yes, Bhola Kumar, I already created a full series on it, that how first you are going to zip the project file, then I'm logging in into the server, then creating a subdomain, and then uploading my project inside it, then also creating the database connection, and so on in the live environment. So let me share the series with you so you can apply your application using by following this series. Okay, so here is the series. Okay, so I shared the link here. So by visiting this link, you can apply your application. And guys, if you have any query, please post this. So here, so I'm going to end this broadcast now. Suleiman, bro, I want to generate monthly bills automatically. So how I can do this? Yes, for this you can use a subscription. So you can use a Stripe subscription, or you can use the PayPal subscription.
and I have a full course on it, that how you can charge the user using a single charge, how you can charge the user using subscription. So where I'm also teaching you that how you can automate this. For example, if you want to collect the payment after the month is ended and then new month is started, so you can collect the payment to if the new month is started, right? And you can also disable this thing. For example, client don't want to directly automatically build, right? He want to think about this, that if he need this feature, then he will be enable this feature manually. So let me share the link with you so you can visit this series, right? Okay, I shared the link. By visiting this series, you will learn about stripe stuff. Yes, Bhola Kumar, you are welcome, and don't forget to share your queries on our website, which is pinned at the top, solutions.cdlcell.com. I know whenever you are doing something in the development stuff, you are facing a lot of issues, right? So you can post your queries without any cost at solutions.cdlcell.com. And thank you very much for this joining this broadcast. So we will meet again on the next Sunday. So thank you very much. Bye bye, guys.